Today we are going to see another example. This is from our textbook, example number 5, and example goes like this. 1 mole of an ideal gas is filled in a cylinder at 300 Kelvin temperature. We have one cylinder over here. Okay. And in this cylinder, they said they have filled up 1 mole of an ideal gas. This is our gas. 1 mole of an ideal gas is filled up in this cylinder. Now, that's the information they had given. At 300 Kelvin temperature and 10 bar pressure. The pressure over here was 10 bar, correct? Then further, this gas leaks in the atmosphere due to the leakage in the valve of the cylinder. Whatever the reason may be, ये गैस यहां पे लीक हो रहा है, बाहर लीक हो रहा है, बराबर कि नहीं? Then what they are asking us, they are asking then what work should be done during the diffusion of this gas. First point what they are asking us is what work should be done, okay, under this condition. Also they are saying calculate the values of delta H and delta U for this process. What are they saying? Find out the values of delta H and, okay, no issue. All these things they have given to us. एक काम करते हैं, इसको मैं जरा साइड में ले लेता हूं. ये हमारा कंटेनर था जहां से गैस लीक हो रहा है. एंड आई थिंक सो एक डेटा जो हम क्लियरली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं वो ये है कि भाई देयर आर टू सिचुएशन. फर्स्ट सिचुएशन इज इनसाइड सिलेंडर गैस के लिए कुछ कंडीशंस दी गई थी, एंड सेकंड जो दी गई थी वो है outside the cylinder. First point, they said how many moles of gas was filled up inside the cylinder? 1 mole of gas. Okay, so inside the cylinder 1 mole of gas was there. Am I right? Suppose ये गैस पूरा लीक होके बाहर जा रहा है, बाहर जाके उसका कितने मोल्स हो जाएंगे? 1 mole, 2 mole or less than 1 mole? What do you think? It should remain same because total, okay, there is a conservation of mass or the conservation of matter, okay, it cannot be created nor it can be destroyed. तो बाहर जाके भी उसके मोल्स कितने बनने वाले? Okay, this is the first thing. Second thing, they said temperature was 300, and I think so they mean inside the cylinder as well as outside the cylinder temperature was 300 Kelvin, because they are not given two different values, they are given the only one value. They said the temperature is 10 bar, sorry, pressure is 10 bar. Where? Inside the cylinder. Inside the cylinder pressure was 10 bar. What do you think about outside the cylinder pressure? Outside कितना होगा? वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बाहर लीक हो रहा है ना, एटमॉस्फेयर में लीक हो रहा है, तो बाहर का प्रेशर कितना होता है? कैन आई राइट 1 बार? करेक्ट. देन दे आर सेइंग अपार्ट फ्रॉम दिस कंडीशन, नाउ गैस लीक हो रहा है, कैलकुलेट व्हाट वर्क शुड बी डन. ओके, okay, point over here. See, they are asking us what work should be done in the diffusion of the gas. They are asking about the work, and we have derived one formula, work done equals to minus P delta V. That means हमको दो इंफॉर्मेशन चाहिए अगर वर्क डन फाइंड करना है. तो प्रेशर चाहिए एंड चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, खाली वॉल्यूम नहीं,
चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम, नीदर ऑफ द थिंग हैज बीन गिवन टू अस। ओके, प्रेशर माइट बी दो दे रखे हैं, सोचेंगे उसके बारे में, दो में से किसको क्या यूज करना है, बट वॉल्यूम वी कहां है? वी उन्होंने इनडायरेक्टली दिया है। वी नो दिस फॉर्मूला PV equals to nRT. Can I use it over here? P1 V1 N1 RT. मतलब जब गैस सिलेंडर के अंदर जब यहां पे था उस टाइम पे उसका वॉल्यूम कितना है, लेट्स फाइंड आउट। उस टाइम पे हमने ये फॉर्मूला लगाया P1 V1 इक्वल्स टू nRT N1 RT, सॉरी। सो V1 इक्वल्स टू N1 RT अपन P1। N1 कितना था? तो भाई वो 1 मोल था। आर की वैल्यू ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में दे रखी है आपको 0.082, करेक्ट। एंड टेम्परेचर 300 केल्विन मैंने लिखा है, करेक्ट। एंड प्रेशर P1 यहां पे कितना था? 10 बार। इसको कैलकुलेट करो, 2.46 लीटर आएगा V1। ओके, एक आंसर आया जो बाद में काम में आने वाला, इसलिए उसको बॉक्स बना के साइड में छोड़ दिया। जितने भी बॉक्स बनाते हैं न्यूमेरिकल में, वो बाद में काम में आने वाली चीज होती है। रिमेंबर दैट, करेक्ट और नॉट? देन वी विल गो ओवर हियर, P2 V2 equals to N2 RT and V2 becomes N2 RT over P2. N2 was 1 mole, R is 0.082, temperature is 300 and pressure बाहर का 1 था, so V2 becomes absolutely correct 24.6 liter। बराबर है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लेट्स कम बैक टू आवर गैस सिलेंडर नाउ। हमको वर्क फाइंड करना है। वर्क के लिए फॉर्मूला हमारे पास जो है W इक्वल्स टू P डेल्टा V। डेल्टा V तो अभी मिल जाएगा V2 माइनस V1, बट अभी भी हमारे पास दो प्रेशर है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। जो P2 1 बार है वो आउटसाइड सिलेंडर प्रेशर है, P1 इनसाइड सिलेंडर प्रेशर है। कौन सा प्रेशर यहां पे यूज करेंगे, बाहर वाला या अंदर वाला? अंदर वाला। ओके, हाउ मेनी आर सेइंग अंदर वाला? जितने भी अंदर वाले बोल रहे हैं वो गलत है, तो कितने लोग बाहर वाला बोल रहे हैं? रिमेनिंग ऑल विल से बाहर वाला। ओके, बट स्टिल दे विल नॉट रेज देयर हैंड। यू नो व्हाई? बिकॉज दे नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई। एक्सप्लेन टू मी व्हाई बाहर वाला प्रेशर कंसिडर करेंगे। टेल मी, वी हैव टू कंसिडर बाहर वाला प्रेशर। व्हाई? डिफ्यूजन बाहर हो रहा है, वर्क बाहर हो रहा है। जब तक अंदर था तब तक कोई काम नहीं हो रहा था। गैस till the time when the gas was inside the cylinder there was no work done. Work is done only and only when it came out from the cylinder. So at what pressure it came out? One pressure. So that's why we'll take the bahar wala pressure. बराबर है? That's 1 bar. Delta V is V2 minus V1. I should have written pressure over here only. Okay, or let me write P2. Then 1 bar, V2 था 24.6, ये था 2.46. Can you get me the answer? 22.14. But what? Bar liter. Pressure is measured in bar and the volume is measured in liter. Correct or not? If you get bar liter answer, but work को bar liter में measure नहीं करते, work को किसे measure करते हैं? Joule. So we have to convert them into what? Multiplied by 101.32. Get me the answer. 22 जूल, या तो फिर -2.243 इंटू 10⁻³ नहीं 10⁻³ जूल क्यों लिख रहे हो? लेट्स मेक इट किलो जूल। करेक्ट और नॉट? ये वर्क का आंसर मिला। Any doubt over here?
Just a minute. Let me resume myself then, right? You raised a correct point. They had asked what work should be done by the system. Can you see we are getting the sign of the work negative आ रहा है? Negative sign indicates the work is done by the system. We got the answer, correct answer we got. Here negative sign indicates correct. Did you get that? Okay, we'll continue further. One more point. They have said, apart from this, they said, okay, calculate the values of delta H and delta U for this process. Okay, आप इसको अभी के लिए एक्सेप्ट करोगे. एक थियोरेटिकल फंडा है, वो ऐसा है. For contraction or expansion of an ideal gas at constant pressure. अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कोई आइडियल गैस एक्सपांड होता है या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है. हमारे केस में वो एक्सपांड हो रहा था. एक थियोरेटिकल फंडा ऐसा है जो हमें एक्सेप्ट करना है, स्टडी में डिटेल में नहीं जाना है. फॉर दैट कंडीशन डेल्टा एच इज ऑलवेज जीरो एंड डेल्टा यू इज ऑल्सो ऑलवेज जीरो. जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है या तो एक्सपांशन आइडियल गैस का होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू क्या लेने वाले हो? तो हियर इसका आंसर क्या आएगा? जीरो. वर्क डन हमें ये मिला. दिस इज आवर वर्क डन and this is our delta H as well as delta U. हाँ जी, किसने बोला प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट? एक्सपांशन अंदर हो रहा था. एक्सपांशन कहां पे हुआ गैस का? और बाहर का प्रेशर कितना था? कब तक? पूरे प्रोसेस के टाइम पे बाहर का प्रेशर कितना रहा? 1 प्रेशर. करेक्ट, 1 बार प्रेशर रहा ना, तो बाहर का प्रेशर कांस्टेंट था, तभी एक्सपांशन हुआ. करेक्ट. सो प्रेशर रिमेन्ड कांस्टेंट. करेक्ट और नॉट? यू मे राइट इट बट बिफोर